Hello guys, welcome to my channel. Satyajit here and you're watching Satyajit's artwork. In this video, I'm going to share the process that I have followed for painting this particular concept illustration from the perspective of ideation, and along with that, I'll also discuss about a topic which is कि इंडिया में डिजिटल आर्ट को क्यों उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है. So without further ado, let's get started. नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर मैं आइडिएशन का बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें बहुत ही सिंपल एंड क्लियर थी कि मुझे एआई जो है उसको दिखाना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आई नीडेड सम काउंटर पार्ट ऑफ इट कि कोई एक दूसरा हायर एंटिटी है जो उसको गवर्न कर रहा है. ऑल्दो वी आर मूविंग टू ए पीरियड जहाँ पे एक पॉइंट पे एआई हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, एंड अगर उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो हमको बहुत डर सा लगता है कि वहाँ पे ह्यूमन या फिर कोई दूसरे एनर्जी या फिर सोर्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. इट विल बी मोनोपोली ऑफ एआई. तो उस चीज़ को थोड़ा विजुअल डेपिक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पे लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा का इस्तेमाल किया, एंड आई हैव शोन कि दैट एआई इज एक्चुअली सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. अगर हम माइथोलॉजिकली भी देखें तो भी कृष्णा का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है इन द गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल दोज कॉस्मिक एनर्जीज दैट आर एसोसिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ running this universe. And I have tried to take something from there and implement it on my concept illustration. This is all about the ideation, and moreover if I want to speak about the composition and all this sort of things, then it is more from the perspective of design कि मेरा जो composition है वो बहुत ज़्यादा odd ना लगे, that it should look like that it is a scene where all these things are happening in a real environment. So I put something like that कि कृष्णा का जो फीट है वो एक स्लोप है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं शायद, एंड दैट एआई इज सर्विंग हिज फीट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिज़ाइन choice that I made in order to make the whole composition look better. Now अभी आते हैं जो important question मैंने रेज किया था इनिशियली कि इंडिया में हमको ऐसा क्यों लगता है कि डिजिटल आर्ट को उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, डिजिटल आर्ट को उस जगह पे नहीं देखा जाता जितना कि ट्रेडिशनल आर्ट को देखा जाता है. नाउ देयर आर डिफरेंट रीजंस टू इट, एंड मैं कुछ अपना जो थॉट्स एंड आइडियाज़ है उसके पीछे जो मुझे लगता है कि शायद वो भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके वजह से शायद ये चीज़ हो रहा है, वो मैं डिस्कस करूँगा. द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि इन इंडिया एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग डिजिटल आर्ट, एंड अगर आप यूट्यूब भी खोलते हैं तो आपको इंडियन यूट्यूबर भी मिलेंगे, इंडियन आर्टिस्ट रैदर, जो डिजिटल आर्ट कर रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग इट. लेकिन एक्चुअली क्या वो डिजिटल आर्ट है, एंड अगर आर्ट है तो क्यों लोग उस पर सवाल उठाते हैं, एंड वाई पीपल आर जस्ट लाइक कि ये नहीं रियल आर्ट है और ये वी आर नॉट going to give it the amount of attention or the respect that we used to give to the traditional art. Now अगर मैं बस सिंपली बात करूँ कि अगर आप ऐसे में सर्च करेंगे डिजिटल आर्ट का तो आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट्स दिखेंगे, एंड इवेंचुअली व्हेन यू विल वॉच द वीडियो विल सी दैट someone is actually making a digital smudge painting. Now digital smudge painting is a technique, it is not a painting. It is not like कि आप oil painting कर रहे हो, it is not that. It is just a technique जहाँ पे आप कुछ smudge brushes का इस्तेमाल करके you create the sensation or you create the likeness of an oil painting जो कि बहुत ज़्यादा stiff, organic, repetitive दिखता है, and someone with very simple अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट, जिसको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा, ही और शी विल बी एबल टू गैस इट वेरी इजीली कि ये किसी टेक्निक या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया है. यू विल नॉट इवन कंसिडर दैट यू हैव डन इट यूजिंग स्मज पेंटिंग टेक्निक. यू विल से कि इसको तो सॉफ्टवेयर से बना दिया गया है. सो दैट होल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द
did of a software। तो ये देखिए आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, उस चीज़ पे ही आपका आर्ट का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है। नाउ जब भी कोई ट्रेडिशनल आर्ट को देखता है कंपेयर टू डिजिटल आर्ट, आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड फॉर ए मोमेंट, और मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट को देखता है तब क्या ढूंढता है। इन दैट केस दैट पर्सन लुक फॉर यूनिकनेस of that particular artist, the expression which he or she is trying to portray in her canvas or the paper, whatever surface the artist is preferring। लेकिन जब भी डिजिटल आर्ट में इतना ज़्यादा रिपीटेशन दिखता है, इतना ज़्यादा उस पर आर्टिफिशियल लुक देखते हैं लोग, इन दैट केस दे आर जस्ट थ्रोइंग इट डाउन टू द ट्रैश, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता है। बट द थिंग इज दैट इट इज़ अस फॉर हुम आवर आर्ट इज गेटिंग डिनाइड। हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक आर्ट मूवमेंट के बारे में बात करूँ, लाइक इफ़ इट इज़ अबाउट इम्प्रेशनिज्म, इन दैट केस ऑल्सो अगर मैं कुछ इम्प्रेशनिस्ट पेंटर का नाम बताओ, जैसे कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल क्लाउड मोने हो गए, कमिल पिसारो हो गए, पॉल सुजैन हो गए, इन दैट केस इफ समवन इज लुकिंग एट देयर वर्क, उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। फॉर दैट मैटर ऑल्दो वैन गॉग इम्प्रेशनिज्म के साथ बहुत पहले से जुड़े नहीं थे, ही इज़ कंसिडर्ड एज ए पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर, लेकिन उनके भी फेमस पेंटिंग है जैसे कि स्टारी नाइट है, सनफ्लावर सीरीज है, उसको भी अगर कोई देखेगा देन वो इंसान बहुत ही आसानी के साथ उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ, जैसे कि सुजैन हो गए या फिर कैमिल पिसारो हो गए या फिर मोने हो गए। सो ऑल दिस थिंग्स विच आई एम शेयरिंग इज मेकिंग ए होल लॉट of difference in the overall outcome, not only in your paintings but the mindset of the people who are going to view and review your work। तो इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो एंड रिजल्ट इज़ गोइंग टू depict the glory, it is not like that। It is more about the process that you have followed. It is more about your own expression. You are a storyteller as an artist. You are telling a story, and whenever you are trying to convey a story of some sort, in that case that person who is viewing it, he or she will try to find your own essence into that work, and the moment you will try to fake it using some other techniques and softwares and this sort of thing, in that case that artistic expression will get lost somewhere, and you will be just left with some sort of mechanical artificial creation which is not even your own creation। Whenever you create as an artist, in that case doesn't matter whether you create something exceptionally good or average or below average, as long as you are proud of doing whatever you have done honestly and from your own ideation, from your own experiences, it reflects on the canvas that you are working on। तो उस चीज़ के बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू जिसके वजह से लोग डिजिटल आर्ट को थोड़े कम आंकते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल आर्ट। दे काइंड ऑफ फील लाइक कि यहाँ ये तो कोई भी कर ले सकता है, लेकिन वेन एवर यू आर कमिंग अप विथ एन आइडिया, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे द एक्सप्रेशन, the thought process that you had before making that piece of art with the audience through your art, in that case that's original। Being original is not only creating something overtly out of the world, it is not like that। It can be a simple subject, it can be a simple still life, you can simply draw an apple and that apple can look like your own apple, some apple that you have just plucked out of the tree from your garden, and you were just trying to display it in front of the people as a form of your own piece of art। So with that note, I'd like to conclude this video। I hope guys you learned something out of this video। If you feel like I'm adding value by making this video, then consider subscribing to my channel, because it doesn't cost you anything, it only provides a token of support for me
so that in future I can produce more videos of this sort. So see you soon with the next video. Till then, take care and keep on creating.